वापी टाउन पुलिस ने तेरा तुझको अर्पण कार्यक्रम के तहत 21 मोबाइल फोन उनके असली मालिकों को लौटाए। कुल 5,06,881 रुपए मूल्य के खोए मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद। वापी, गुजरात राज्य के पुलिस महानिदेशक एवं मुख्य पुलिस अधिकारी माननीय विकास सहाय साहब के मार्गदर्शन में जनता केंद्रित पुलिसिंग को सशक्त बनाने तथा पुलिस के प्रति आमजन का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से तेरा तुझको अर्पण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सूरत रेंज के पुलिस महानिरीक्षक माननीय प्रेमवीर सिंह इप्स तथा वलसाड जिले के पुलिस अधीक्षक माननीय युवराज सिंह जाडेजा इप्स के दिशा निर्देश पर वापी टाउन पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वापी डिवीजन के उप पुलिस अधीक्षक श्री B.N. दवे के मार्गदर्शन में वापी टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज खोए गुम मोबाइल फोन की अर्जियों को CEIR पोर्टल एवं तकनीकी सर्विलांस के माध्यम से जांचा गया। इसके परिणामस्वरूप कुल 21 मोबाइल फोन, जिनकी कुल कीमत 5,06,881 रुपए है, खोज निकाले गए। आज वापी टाउन पुलिस स्टेशन परिसर में आयोजित तेरा तुझको अर्पण कार्यक्रम में उप पुलिस अधीक्षक श्री B.N. दवे की अध्यक्षता में इन सभी मोबाइल फोन उनके मूल मालिकों को विधिवत सौंपे गए। इस अवसर पर वापी टाउन पुलिस इंस्पेक्टर श्री M.P. पटेल के नेतृत्व में पूरी टीम की सराहना की गई। इस पहल से यह संदेश और मजबूत हुआ कि पुलिस जनता की मित्र है और आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर है। Oppo A3X વિરલભાઈ મુકેશભાઈ પટેલ Oppo X6 રાહુલ કુમાર સુરેશભાઈ કેવટ મડકમોડા મોહન સિંહ ધનસિંહ કોરી Oppo A5 F21 બ્રિજેશ કુમાર સિંહ નથી યોગેશ ચંદ્ર ત્રિપાઠી સુરત સેમસંગ A14 મોતી सलीम अली विकास रितेश भगत ચલો તમને બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। આજરોજ વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા જે લોકોના મોબાઈલ ફોન ખોવાઈ ગયા હતા અથવા તો ચોરાઈ ગયા હતા અથવા તો કોઈપણ રીતે ગુમ થઈ ગયા હતા એ મોબાઈલો શોધી અને જેના મોબાઈલ હતા એ લોકોને પરત કરવામાં આવેલ છે। ગુજરાત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ કાર્યક્રમ તેરા તુझको અર્પણ એ અંતર્ગત આજે તમામ લોકોને 21 મોબાઈલ જેની કિંમત આશરે 5 લાખ રૂપિયાથી વધુ થાય છે તે મોબાઈલ તેરા તુझको કાર્યક્રમ અંતર્ગત પરત કરવામાં આવેલ છે। ભારત સરકાર દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલ CEIR પોર્ટલ કે જેમાં ખોવાયેલા ગુમ થયેલા મોબાઈલની માહિતી અપલોડ કરી અને આ મોબાઈલને પોલીસ દ્વારા શોધવામાં આવેલ છે। જે મોબાઈલ શોધી અને આજે 21 જેટલા લોકોને 5 લાખથી વધુ કિંમતના મોબાઈલ પરત આપવામાં આવેલ છે।